So we'll start with uh, div. Div is a tag which is used for dividing a web page into several sections, and I'll give it an ID as the ID to this div may be location. We give ID to tags so that we can access it through our program, through our JavaScript code. So we give this div. Now we create a button. We create button by writing input type equals to button. And on this button, we want to give a label as click me. So this will have a button with a label click me, and on click will call a function. We'll call the F1 function, suppose that will be creating, and this is one function, one button. Now we want one more function button, and this is to clear whatever we have printed through this F1 function. So we have another function F2, and this function F2 will also be written in the head part of this script, this part. Okay, now let us see what is the output. We have a click me and we have a clear function. Nothing is happening because we have not written any code in the click me or the clear button. So we'll quickly write some code. Now, whenever this click me button is clicked by the user, we want to print something in this location div. We want to print hello user, welcome to JavaScript or something. So how we do it, we write document dot get element by ID. Document dot get element by ID. And what is the name of the, what is the ID of the div? It is location. So the ID is location. And whatever we want to print in that division is accessed through inner HTML. So we'll write inner HTML. And in the inner HTML, suppose we write hello, so welcome to JavaScript. So what will happen? Just so what we have written here is whenever this button is clicked by the user, this F1 function will be called, which is written in the head. And in that F1 function, what we have written in this F1 function, we have written that this div, this division of the web page will have a value, hello user, welcome to JavaScript. And how do we access this location? We access this location through this ID. This is a user-defined name. Location is a user-defined name. Suppose this instead of location, if we give it top section like this, then here we'll access with this name top section of the web page. So document.get element by ID top section, and inner HTML means we want to write something here. And what we want to write? We want to write hello user, welcome to JavaScript. And what will happen when this clear function, clear button is clicked? So we want to clean this. So again, we'll use the same statement. We'll copy it. I'll paste it here.
And here I'll just give an empty string. So if I give an empty string, it will print. Now, let us see how things are working. I am clicking the click me button, nothing is happening. We'll have to see what has happened. So let us see why this is not getting printed. So input type button value is click me on, click is F1 function. And here we have written the F1 function, but nothing is happening. So why nothing is happening? So if this sort of things happen that you are clicking the button, nothing is happening. The first thing we want to check whether this function is getting invoked or not. So this is how we debug. This is one way of debug. I'll write OK. And now I'll try to see whether this is getting invoked or not. The alert is coming or not. So if I'm clicking, it's calling OK. That means the function is getting invoked, but the value is not coming. So that means that document dot get element by ID top section dot inner HTML but T small c again. I've corrected that. Let me see now. Okay, and see it is coming. So what was the error? We wrote the case was not properly matching, and when we click the clear button, it is getting. So this okay, we do not want. What we will do, we'll come here and we'll remove this. This was just to check whether the function is getting. So now when you see, we have two buttons. Once we click it, it is printing hello user, then it is getting clear. Hello user clear. Now suppose we want this space to be there even when we have not clicked and when there is no text in it. So what we will do, we'll take the help of CSS. So now every program will have CSS as well as JavaScript. So we'll have a class equals to, I'll give top section space. Suppose I give the name as top section space. So what I have to do, I have to create a class here, dot top section space, and here I'll mention height. Okay. Now let us see what's the output. I have to refresh if nothing is coming. Now we have a space. Even when we do not have some content there, still we have a space. So this is done with the help of just one line of code. There are many ways of doing it. This is one way. What we have done, we have used the CSS and we have created a class. This is the name of a user-defined class. What we have fixed the height so that it is always there. Now, we want some more decoration to it. We want this to be properly decorated. So we'll add one more div. And we'll create a class called maybe card. And everything that we have, we put it in this div. This we have not used, so I'm here for now. Now, in this card class, what we have to do? We have to come here and do some properties of the card class. Let us start with the width. Let us give the width as 500 pixels. Then I'll use margin. 50 pixel top and bottom and right auto that will make it in the center. Then I'll also give a border. Border has 3 parameters.
width of the border, then how this border will be drawn solid, and then I'll take a color. So this will be the border. I'll also mention height. So I'll get 400 pixel height. And now let us now see the output. So it has come like this. We have a border and everything is coming in this. Okay. Now let us have some more decoration to it. I'll give background color. Let me give some light color to it. Okay. I'll give border radius so that the box is circular at the edges. See. And now let me see. So this is how things are looking. I want this to be in the center. Click me, and here this you can see it is getting not printing properly in the center. So I want some more decorations to it. I'll come to the code. What I'll do, I'll create one more div, and I'll add one more class as maybe card items. So card items is card items. Still good. Now, we'll have to create one more card items class. So I'm coming here. Card items. And in the card items, first thing I want some gap. So I'll get 10 pixel, top bottom, 10 pixel, maybe that right. And I want the things to be aligned as center. Okay. So this is now coming properly. अब ये button जो है ये बहुत flat दिख रहा है, click me and clear button. So we want to decorate these buttons. So let me decorate the buttons and take the help of CSS. I'll come to JavaScript also. Don't worry. So I'll create one dot button class. And these buttons will have a width of background color source color source radius font size larger. And now we'll call these styles.btn on these buttons. How do we call? We write here class equals to button. So if we write class equals to button, all these effects that we have mentioned here will be imposed on this button class, and use this class equals to button as well. I'll give some adding.
So this is the button. How we have created? We have created with the help of CSS. Increase the size of this button. 150 is too much. 800. Now you see. Okay, but we want some more padding. So we will just give padding as 26. ऐसा कुछ हो गया दोनों बटन के बीच में we need some space, so we can add some margin. If we want a space between two tabs, that is done with the help of margin. And if we want a space inside the text, then we give it with the help of padding. So let's first of all, I'll choose some very these are all like not any fixed rule. The rule is that whatever you mention here will be linked through this class attribute. Or a color we can make a bit light. It was light diagram. So this is what we have made up till now. We want some gap between the buttons. And add some margin. So gap pattern. So this is what we have done with the help of the color. If the button color is not looking good, we can have different color. But let's try some other color. इसको रखते हैं और अभी हम लोग will decorate this also. Now we want some more buttons, and what we want is we have to have 3 buttons: red, blue, and green. When we click the red button, the text will become red. When we click the blue button, it will become blue, and when we click the green button, it will become green. So I'll come to the code here. I'll give a line here, and then I'll create 3 more buttons and put type equals to value equals to I'll not give value on equals to suppose for the red color function, and we have class equals to बस इतना को देखो. We have one button. When this button will be clicked, we'll call a red color function. So we'll use a JavaScript, and then we'll use to decorate this. We'll use a button red class. So first I'll go to the CSS part. Button red is the name. This button red. So what we want in the button red is background color is well, radius is 50%. If we give border radius as 50%, it will become a circle.
width. Can have one express well. Then we can have a margin. And we can have a bag. Let's come to the output and see. एक बटन बन गया रेड कलर का जैसा हम लोगों को चाहिए. अब इसको क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज वी हैव नॉट एडेड जावास्क्रिप्ट टू इट. ऐसा ऐसा दो बटन और चाहिए. पहले दो बटन और बना लेते हैं. यहाँ पर we want two more buttons. One button will be calling the green color and the define function. Other will be calling the blue color function. And this will have a button blue CSS class and button green CSS class. So we have to create two more classes, button blue and button green. So I'll come here. I'll copy this two more times. This is button blue. I'll only change the color. Which is same button. Or once more, button जगह पे button बना और एक अब आउटपुट देख लेते हैं. तो ये तीन बटन हम लोग के पास बन गए हैं. एक बटन है रेड, एक बटन है ग्रीन, एक बटन है ब्लू. अभी क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है. चाहते क्या है कि जब हम लोग रेड बटन को क्लिक करें तो ये रेड से हो जाए, लिखा जाए, ग्रीन से करने से ग्रीन हो जाए और इससे करने से ब्लू हो जाए. उसके लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा. अब हम लोग आ जाते हैं कोड में और CSS में हम लोगों ने मेंशन किया रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर. ये फंक्शंस बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो ये जावास्क्रिप्ट में आते हैं. अभी हम लोगों ने स्टाइल पे काम किया है. अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों के पास फंक्शन चाहिए और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को करना क्या है, इसका स्टाइल कलर चेंज करना है. डायनामिकली वी हैव टू चेंज द स्टाइल कलर. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आईडी हम लोग को क्या है, टॉप सेक्शन नाम से. टॉप सेक्शन आईडी लेंगे और इसका स्टाइल चेंज करना है. स्टाइल में बहुत सारा होता है. कौन सा कलर है स्टाइल चेंज करना. कलर क्या होना चाहिए, कलर हमको रेड. Two more functions are required. तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन इसका कॉपी करते हैं, एक फंक्शन और इसका कॉपी करते हैं. रेड कलर नीचे करते हैं, ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर. यहाँ पे रेड की जगह पे हम लोग ग्रीन मेंशन करेंगे. यहाँ पे रेड की जगह हम लोग कोड देख लेते हैं. क्लिक में रेड ग्रीन हो रहा है जैसा हम लोग चाह रहे हैं. अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, व्हाट हैव वी लर्न्ड. वी हैव लर्न्ड दैट
We can, with the help of JavaScript, we can more make the page interactive, and with the help of CSS, we can have some decorations to it. अभी देखिए जो बटन बना है, ये बटन में हम लोगों ने CSS लगा के इसको ऐसा बनाया है. ये रेड कलर का जो बटन है, ये सर्कुलर हम लोगों ने कर दिया है. और ये बटन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल जो फ्लैट बटन्स होते हैं वैसा होगा. विद द हेल्प ऑफ CSS वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स. अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि दो बटन और लेते हैं. एक से हम लोग साइज इसका जो हेलो यूजर लिखा हुआ है इसका साइज बड़ा कर देंगे, एक साइज छोटा कर देंगे. ओके. या फिर हम लोग अप एरो की ले लेते हैं. अप एरो की से साइज को बड़ा, एवरी टाइम वी क्लिक द अप एरो की द साइज ऑफ दैट टेक्स्ट विल इंक्रीज, और नीचे करने से इट कैन डिक्रीज. एनीथिंग वी कैन हैव अ लॉट ऑफ इंटरैक्टिव थिंग्स. एक छोटा सा चीज पहले हम लोग इसमें दो बटन बना देते हैं. वी ऐड 2 मोर बटन्स. कोड में आ जाते हैं. कोड में आकर के हम लोग दो बटन और बनाते हैं साइज के, और इसका कॉपी कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं. दिस अ बटन. क्लिक करने से मैक्स साइज कर देते हैं, और यहाँ पर क्लास, सपोज अभी कोई क्लास नहीं कॉल, लीव इट लाइक दिस जस्ट टू सी कैसा दिखता है. और on click suppose we have a h1 function. जैसे हम लोग h1 साइज में उसको लेकर जाएंगे, then we have a h2 function, और यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं h1 h suppose दो ही रखते हैं, h3 and h1. These are for headings h1, h2, h3, h4, h5, h6. ये हेडिंग के लिए होता है. अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को h1 नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, h3 नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा. अभी हम लोगों ने कोई इसके लिए डेकोरेशन नहीं यूज किया है. वी वांट जस्ट टू बी इंटरैक्टिव. द फंक्शन h1 एक बनाते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं, और एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं h3. इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं. अब इसमें हम लोग को क्या लिखना होगा, इसमें हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट हेडिंग साइज में आ जाए. तो ये इनर HTML इक्वल्स टू एंड कर देते हैं. And we'll do this. Save. Just copy कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं. Now let us see. We have two simple buttons h1 और h3. ऐसे है, उसको क्लिक करने से ये h1 साइज का, और h को क्लिक करने से h3 साइज का हो. ऐसा हम लोगों को 6 सेक्शंस बनाना होगा, और सब हेडिंग के लिए यूज करना होगा. तो अभी हम लोग एक चीज और सीखेंगे कि instead of creating 6 functions, we can create only one function and then we can pass parameter, और उससे हम लोग चेक करते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं. तो अभी सबसे पहले हम लोगों के पास we want 6 headings. तो यहाँ पर 2 हेडिंग हम लोगों ने बनाए. तो I'll copy h1, h2, h3 सभी साइज का, h4, h5, these are the 6 default heading.
H1, H2, H3, H4, H5, H6। देखिए there are two ways, हम लोग H1, H2, H3 6 फंक्शंस बना लें, या फिर हम लोग एक ही फंक्शन बनाते हैं H नाम से, और सभी में पैरामीटर पास कर देते हैं। तो सब में एक ही काम करना है, इसमें पैरामीटर पास करते हैं 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे। देखिए हम लोगों ने अभी बनाया था दो फंक्शन H1 और H3, बट सब में एक ही तरह का काम करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से H1 2 3 4 5 6 पास कर रहे हैं, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू फंक्शंस नाउ विल हैव ओनली वन फंक्शन H नाम से, और यहाँ पर X जो एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में 1 2 3 जो बटन क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये X का वैल्यू यहाँ पर आ जाए, H1 यहाँ पर जो है ये X का वैल्यू आ जाए, ताकि वहां पर जो भी चीज हम लोगों ने किया हुआ है वो टैग अकॉर्डिंगली कुछ कर जाए। लेट अस ट्राई के हम लोग इसको कितना बढ़िया कर सकते हैं। वेरिएबल टैग वेरिएबल बना रहे हैं, और इस टैग 1 वेरिएबल में लोग क्या चाहते हैं, H प्लस X, और ये H जो है ये फिक्स्ड है, और X जो है वेरिएबल से आएगा, तो H1 H2 H3 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ काम करें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैग स्टार, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टैग एंड। लेट अस सी पहले वो क्या रहा है, और फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कोड। लेट मी H1 H2 H3 H4 H5 H6 H1। अब कोड समझते हैं, कोड कैसे है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को 6 बटन है, ठीक है, और सब में हम लोग H फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से पैरामीटर 1 2 3 4 5 6 भेज दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हेडिंग है, पहले जो वैल्यू भेजेंगे वहां से वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, X में वैल्यू आ जाएगा 1 अगर H1 बटन क्लिक होगा, 2 अगर H2 क्लिक होगा, वैसे कुछ। और यहाँ पर एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में इस यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं H, और X का वैल्यू 1 है तो H1 हो जाएगा, 2 है तो H2 H3 H4 ऐसे। और यहाँ पर जो टैग था उसमें हम लोगों ने ये वैल्यू वेरिएबल को डाल दिया है, स्टार्ट टैग में भी एंड टैग में भी। तो अगर वेरिएबल में वैल्यू H1 है तो H1 हो जाएगा, H2 है तो H2 हो जाएगा, तो ये टैग इस तरह से काम करेगा। और जब भी हम लोग किसी मैसेज के अंदर किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कोट्स में नहीं होगा, ये कोट्स के बाहर होगा। तो कोट्स यहाँ से शुरू हो रहा है और ये कोट्स के बाहर है, फिर ये कोट्स में शुरू हो रहा है, फिर ये कोट्स के बाहर है, इस तरह से। तो हर बारी क्या हो रहा है, जब H1 क्लिक हो रहा है तो ये टैग 1 का वैल्यू H1 हो जा रहा है। टैग 1 एक वेरिएबल, इसका नाम आप T भी रख सकते हैं, X भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो ये टैग 1 का वैल्यू H1 H2 H3 हो रहा है, और ये यहाँ पर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम लोग 6 वेरिएबल्स 6 फंक्शंस नहीं बना रहे, वी आर क्रिएटिंग ओनली 1 फंक्शन, और थ्रू द वैल्यू इन द पैरामीटर हम लोग उसको अकॉर्डिंगली एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह का फंक्शन बनाने से क्या होता है, कोड कम हो जाता है। अभी अगर हम लोग 6 बार इस चीज को लिखते हैं तो कोड बड़ा हो जाता है, अभी हम लोगों ने इस तरह से कर लिया तो कोड थोड़ा छोटा हो जाए। तो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू जावास्क्रिप्ट। अब ये बटन बहुत सिंपल दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। हम लोग इसको अगर थोड़ा करना चाहते हैं कुछ काम इस पे, तो क्या करेंगे,
हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्लास। तो एक क्लास बना लेते हैं, उसी को सब में कॉल कर लेंगे। इस क्लास का नाम रखते हैं बटन हेडिंग, और इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर और रेडियस ले लेते हैं। और 5 पिक्सल, border radius is 5 pixel and color is brown. बस, और ये जो class है, now we'll link this class with all these buttons. कैसे लिंक करते हैं? लिखेंगे class goes to, and this is to be implemented in everybody. यहाँ पर आएगा जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि सारे जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगी उसमें जावास्क्रिप्ट विल बी यूज्ड। उसका फंक्शंस, उसका पैरामीटर, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा बटन बन गया, इसको थोड़ा सा और और कुछ ऐसा हो गया। और इसको और अच्छा बना सकते हैं, जैसा अच्छा है। इन सब से भी हम लोग बॉर्डर हटा सकते हैं। जो ब्लैक कलर से बॉर्डर दिख रहा है, इसको हटा सकते हैं। तो इसको अगर हटाना है तो हम लोग को ये लिखना होगा बॉर्डर 0 इंसर्ट, बॉर्डर 0 पिक्सल, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सबसे देखो बॉर्डर हट गया, अभी जो बॉर्डर लगा हुआ था बॉर्डर हटा दिया हम लोगों ने। इसका ब्रेड्थ बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा काम और हम लोग कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ JavaScript as well as CSS to make our page more interactive. अभी हम लोग सिर्फ सिंटैक्स सीख रहे हैं। ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कॉल फंक्शंस, हाउ वी क्रिएट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, एंड हाउ वी क्रिएट क्लासेस, हाउ वी implement those CSS classes with the HTML tags. जब हम लोग रियल काम पे आएंगे तो वहां पर हम लोग उसको और बेटर वे में बनाएंगे। अभी जो हम लोगों ने कार्ड बनाया है, इस कार्ड के अंदर हम लोग सब चीज बना के दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए जावास्क्रिप्ट एज वेल एज CSS। So this is what we have to discuss today. इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी want to ask something, you can